आज आमर 4 चैप्टर रेचन बा एक्सट्रेशन बुझेगा एक्सट्रेशन विषय आम आलोचना करवा विभिन्न प्राणी मान रेचन प्रथम रेचन बा एक्सट्रेशन कहले कौन बुझा एक्सट्रेशन क्या कहुए ना दि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया यूरिक एसिड एंड एमोनिया इज नोन एज एक्सट्रेशन बुझेगा साधारणतः आमर जो शरीर विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेस रु जात वर्ज्य वस्तु यथा आम जो श्वेतसार जातीय खाद्य खाऊे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रु आमर कौन उत्पन्न होता है अंगारकाम्ल कौन अंगारकाम्ल है पुष्टिसार चयापचय फल कौन उत्पन्न हुए एमोनिया कौन एमोनिया एवं आमर मुख्यतः ये अंगारकाम्ल और एमोनिया एमाने आम शरीर कौन विषाक्त तेणु गोटे विशेष निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा एमाने आम शरीर वर्ज्य वस्तु गुड़िक निष्कासित होता है साधारणतः आमर अंगारकाम्ल आउ एमोनिया रासायनिक संयोजन यकृत ठारे लिभर यूरिया तैयारी हुए कौन तैयारी हुए यूरिया तैयारी हुए यूरिया है 2NH3 प्लस CO2 कोठे ना लिभर बा यकृत कौन यकृत ठारे मेरुदंडी प्राणी मान ठारे विशेषकर मनीष ठारे कौन तैयारी हुए यूरिया कौन यूरिया तार संकेत है NH2 CO NH2 बुझेगा प्लस H2 साधारणतः आम जो श्वेतसार जातीय खाद्य खाऊे भात तार चयापचय अंगारकाम्ल जात होता है बुझेगा एवं पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया जात होता है एमोनिया हूँ सबुठ विषाक्त एवं यह जल में द्रवणीय कौन जल में द्रवणीय बुझेगा साधारणतः आमर एमोनिया और अंगारकाम्ल रक्त माध्यम बुझेगा एमोनिया हूँ गोटे गैस कौन गोटे गैस तेणु जल में द्रवीभूत होता है तेणु एमोनिया और अंगारकाम्ल रक्त माध्यम यकृत निकट में बुझेगा कौन तैयारी हुए यूरिया कौन यूरिया जार संकेत है कौन NH2 CO NH2 है एवं जल बाहर बुझेगा तेणु मेरुदंडी प्राणी मान ठारे अंगारकाम्ल और एमोनिया रासायनिक संयोजन यकृत ठारे यूरिया तैयारी होता है यूरिया जल में द्रवणीय जहाँ को आम कहे यूरिन एवं यूरिन मूत्र आकार ब्रुकक द्वारा क्या द्वारा ब्रुकक द्वारा निष्कासित होता है क्या द्वारा निष्कासित होता है ब्रुकक द्वारा निष्कासित होता है तेणु यूरिया तैयारी हुए यकृत एवं रक्त माध्यम ब्रुकक रक्त छणा हुए एवं रक्त रु यूरिया अलग होता है तेणु ब्रुकक आमर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मुख्य रेचन अंग हूँ किए ब्रुकक और चर्म कौन चर्म बुझेगा साधारणतः रेचन पदार्थ अनुसार जीव मान को 3 भाग विभक्त कराई केते भाग 3 भाग विभक्त कराई बुझेगा यथा कौन ना इम्यूनोटेलिक यूरियोटेलिक आउ इरिकोटेलिक जो प्राणी मानकर रेचन पदार्थ एमोनिया से कहुए इम्यूनोटेलिक जो मानकर रेचन पदार्थ यूरिया से कहुए यूरियोटेलिक जो मानकर रेचन पदार्थ यूरिक एसिड से कहुए यूरिकोटेलिक साधारणतः एमोनिया आम शरीर में 0.0001 रु 0.0003 mg पर 100 ml ब्लड एमोनिया इज हाईली टॉक्सिक या ठारो अधिक एमोनिया जल में द्रवणीय तेणु एमोनिया अंगारकाम्ल ठारो एमोनिया अधिक विषाक्त तेणु संगे संगे आम शरीर कौन बाहर को बाहर दरकार बुझेगा तेणु ये एमोनिया और अंगारकाम्ल रासायनिक संयोजन यकृत यूरिया तैयारी हुए एवं रक्त माध्यम ब्रुकक निकट को आसे ब्रुकक रक्त छणा हुए साधारणतः आम मनीष 18 रु 38 ग्राम 38 mg पर 100 ml ब्लड यूरिया थाए कौन थाए यूरिया थाए साधारणतः आमर जो आक्वाटिक एनिमल्स अच्छा इनवर्टिब्रेट्स है जलचर प्राणी अमृतंडी जलचर प्राणी जो मैंने अच्छा से ही कौन ना निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जलीय परिवेश को एमोनिया को निष्कासन करता कि मनीष तार से व्यवस्था न थाए तेणु एमोनिया और अंगारकाम्ल रासायनिक संयोजन यकृत यूरिया तैयारी हुए एवं ग्लुकोज द्वारा कौन
निष्कासित होई थाए बुझेला। तेणु आमर ए जो प्राणी मान को तीन भाग में विभक्त कराई साधारणतः मुख्यतः आमर जो रेप्टाइल्स रही कौन बार्ड्स आउ रेप्टाइल्स से रेचन पदार्थ हूँ यूरिक एसिड कौन यूरिक एसिड बुझेला। यह हूँ जल अद्रवणीय किंतु एमोनिया आउ यूरिया एमाने जल रे कौन द्रवणीय कौन जल रे द्रवणीय बुझेला। तेणु विभिन्न प्राणी मानकर रेचन अंग भिन्न भिन्न होता है कौन होता है भिन्न भिन्न होता है यथा आमर एककोशी एमिबा किए एककोशी एमिबार रेचन अंग होची संकोचिका रसधानी बा ताको आमे कहउचे कोन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आ प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुझेला। ए एमिबार रेचन अंग कोन प्लाज्मा झिल्ली आ संकोचिका रसधानी बुझेला। स्पंज हाइड्रोपोनिक प्राणी मानकर निर्दिष्ट रेचन अंग न थाए एमाने सीधा सड़क जलीय परिवेश को विसरण प्रक्रिया रे कौन ना सेमानकर वर्ज्य पदार्थ निष्कासन करी थांती बुझेला। साधारणतः हमर ए जो जिया जोको कौन जिया जोको आदि प्राणी मानकर रेचन पदार्थ होउची कौन रेचन अंग होउची नेफ्रिडिया कौन जियार रेचन अंग कौन नेफ्रिडिया बुझेला। झिटिकार रेचन अंग कौन ना मालपिजियान नलिका झिटिकार रेचन अंग कौन मालपिजियान नलिका बुझेला। एवं आमर जो शिखा कोश है चेप्टाकृमि कार चेप्टाकृमि आमर जकृत कृमि एमानकर रेचन अंग होउची कौन शिखा कोश बा फ्लेम सेल कौन फ्लेम सेल बुझेला। एवं मेरुदंडी प्राणी मानकर तथा मनुष्यर रेचन अंग होउची किए ना वृकक और चर्म किए वृकक और चर्म मनुष्यर प्रधान रेचन अंग होउची वृकक द्वितीय रेचन अंग होउची कौन चर्म। तेणु वृकक द्वारा बुझेला शरीरर ए रेचन व्यवस्था द्वारा शरीरर अंत परिवेश सुरक्षित रही है कौन रही है अंत परिवेश सुरक्षित रही है। वृकक मुख्यतः दीटा फंक्शन करते है गोटे है कौन ना गोटे है ऑस्मो रेगुलेशन गोटे कौन ऑस्मो रेगुलेशन ये ऑस्मो रेगुलेशन कौन ना जल एवं सॉल्ट वाटर आउ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है यार जो रेगुलेशन को कहा जाए कौन ऑस्मो रेगुलेशन मुख्यतः यह झाड़ आकार को आकार झाड़ आकार चर्म द्वारा निष्कासित होई थाए ऑस्मो रेगुलेशन। द्वितीयटी है कौन ना एक्सक्रेशन कौन एक्सक्रेशन यही दीटा प्रक्रिया द्वारा शरीरर अंत परिवेश सुरक्षित रही है कौन रही है शरीरर अंत परिवेश सुरक्षित रही है कहीं आमर शरीर वृकक मुख्यतः चारोटी कार्य करे गोटे है कौन ना फिल्ट्रेशन परिश्रवण है रक्त छाणे वृकक प्राय दिन को 1800 लिटर केते 1800 लिटर रक्त छणा हुए वृकक रे एवं से मात्र 2.5 ରୁ 3 लिटर यूरिन बाहर मूत्र बाहर कौन बाहर मूत्र बाहर बुझेला। ता सहित कौन ना आमर क्षरण करे कौन करे क्षरण वृकक दीटा हार्मोन क्षरण करे गोटे है कौन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आ गोटे है रेनिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कौन करे ना आरबीसी तैयारी करे एवं रेनिन हार्मोन उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करे। तृतीयटी है कौन ना आमर निष्कासन कौन निष्कासन एवं अवशोषण वाटर रिअब्जॉर्प्शन हुए अधिकांश जल पुनः शोषण हुए बाय द हेल्प ऑफ एडीएच हार्मोन। तेणु वृकक आम शरीर पीएच बैलेंस करे बुझेला अम्ल और क्षार मात्रा को नियंत्रण करे ता सहित एक्सक्रेशन रेचन प्रक्रिया माध्यम शरीर वर्ज्य वस्तु यथा यूरिया आ यूरिक एसिड है ताकू निष्कासन करता है। आमर मुख्य रेचन पदार्थ हूँ यूरिया कौन यूरिया साधारणतः आमर ये जो रही किए देख ये जो रही हाथी मामल्स शार्क है बेंग एमानकर रेचन पदार्थ हूँ कौन यूरिया कौन यूरिया एमाने कौन कौन त्याग करते यूरिया है ता सहित मनुष्यर रेचन पदार्थ हूँ कौन यूरिया बुझेला। ये जो रही बार्ड्स आ रेप्टाइल्स एमानकर रेचन पदार्थ हूँ यूरिक एसिड कौन यूरिक एसिड बुझेला।
ୟୁରିକ ଏସିଡ ସାଧାରଣତଃ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କିନ୍ତୁ ୟୁରିଆଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ବୁଝିଲା। କାହିଁକି ଏମାନେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏମାନେ କମ ଜଳ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଳ ସହିତ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ବାର୍ଡସ୍ ଆଉ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ। ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ହଉଛି ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ହେଲା ହାତୀ ସାର୍କ ହେଲା ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ହଉଛି କଣ ୟୁରିଆ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଧିକ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ୟୁରିଆ ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା। ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁରିନ୍ ବା ମୂତ୍ର କଣ କୁହାଯାଏ ୟୁରିନ୍ ବା ମୂତ୍ର ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷରେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ମଣିଷରେ ଦିଟା କିଡନୀ ରହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି କିଡନୀ ଏଇଟା କଣ କିଡନୀ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କିଡନୀରେ ଏଠି ବୃକକୀୟ ଶିରା ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ରକ୍ତ କଣ କିଡନୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏ କିଡନୀରେ କଣ ହବ ରକ୍ତ ଛଣା ହବ କଣ ହବ ରକ୍ତ ଛଣା ହବ ହେଲା। ଛଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ରକ୍ତରୁ କଣ ହବ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହବ। ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁରିନ୍ ଏବଂ ୟୁରିନ୍ ମୂତ୍ର ଆମର ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହେଲା ବୃକକ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଆଉ ମୂତ୍ରାଶୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ କଣ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ମଣିଷର ପ୍ରଧାନ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବୃକକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଚର୍ମ ବୁଝିଲା। ଚର୍ମ କଣ କରେ ନା ଅଶ୍ମ ରେଗୁଲେସନ କରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କଣ କରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଯୋଉ ଝାଳ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଝାଳ ଯାହା ମୂତ୍ର ସେଇଆ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଝାଳ ଆକାରରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ କଣ ହୁଏ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ମ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ବୁଝିଲା ଏବଂ ବୃକକ ହଉଛି କଣ ପ୍ରଧାନ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ରେଚନ ହେଲା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଉ ହାଇଡ୍ରା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ସେମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ କଣ ନା ସିଧାସଳଖ କଣ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମୋନିଆ ସାଧାରଣତଃ କଣ ଏମୋନିଆ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ କଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାମଲ୍ସ ରହିଲେ ସେମି ଆକ୍ୱାଟିକ ରହିଲେ ବୁଝିଲା ସେମାନେ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାର୍ଡସ୍ ଆଉ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ସେମାନେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଅଶ୍ମ ରେଗୁଲେସନ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସମସ୍ଥିତି କଣ ସମସ୍ଥିତି ବା ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଥାଏ। ସମସ୍ଥିତି ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଉ ଅନ୍ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ କଣ ବଞ୍ଚିଥାଏ କଣ ହେଇଥାଏ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ଯକୃତ। ଯକୃତ ଠାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଏମୋନିଆର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନାରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ। ୟୁରିଆ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ନିକଟକୁ ଆସେ। ବୃକକରେ ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୁଏ। ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁରିନ୍ ବା ମୂତ୍ର। ତେଣୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ଆମର କଣ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ କଣ ରହିଛି ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ। କିନ୍ତୁ ଯକୃତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଲିଭର ଏଇଟା କଣ ଲିଭରରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଠାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଏମୋନିଆର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନାରେ ଯକୃତ ଠାରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଲା ବୃକକ ଦିଟା ବୃକକ କେତେଟା ବୃକକ ଦିଟା ବୃକକ ବୁଝିଲା। ବୃକକ ଦ୍ୱାରା କଣ ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ସେଇଭଳି ଆମର ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଜିଆର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କଣ ନେଫ୍ରିଡିଆ ଅପସନରେ ଥିବ। ଝିଣ୍ଟିକାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କଣ ମାଲପିଜିଆନ ନଳିକା ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଚେପ୍ଟାପ୍ଲୁମିର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କଣ ଶିଖାକୋଷ। ଏଇ ତିନିଟା 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ରେଚନ ଅଙ୍ଗରୁ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡରେ ପଡି ଆସୁଛି ଏବଂ ପଡିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର କଣ ଝିଣ୍ଟିକାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗଟା ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି ହେଲା। ଚେପ୍ଟାପ୍ଲୁମିର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କଣ
ଆଉ ଜିଆର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କଣ ଏବଂ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିଏ କିଏ ବୃକକ ଆଉ ଚର୍ମ କଣ ବୃକକ ଆଉ ଚର୍ମ। ତେଣୁ ଏକ୍ସକ୍ରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ বা এক্সক্রেশন দ্বারা মଣିষরে বর্জ্য পদার্থর নিষ্কাশিত হইଥାଏ। আমি যে খাদ্য খাউছে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যর এন্ড প্রডক্ট হচ্ছে অঙ্গারকাম্ল পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্যর বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে এমোনিয়া। এই দুইটা অঙ্গ কোন শরীর পাই বিষাক্ত তেমন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা শরীর কোন হইଥାଏ নিষ্কাশন হই থাকে বুঝলা। সেপাই আমার রয়েছে কোন মুখ্য রেচন অঙ্গ কিয়ে বৃক্ক। দিনকু প্রতি মিনিটে 1250 ml ব্লড বৃক্ক মধ্যে প্রবেশ করে এবং দিনকু 1800 লিটর কেতে লিটর 1800 লিটর রক্ত ছଣା ହୁଏ। ସେଥିରୁ ମାତ୍ର କେତେ 2.5 ରୁ 3 লিটর ୟୁରିନ୍ ମୂତ୍ର ବାହାରିବ। କଣ ବାହାରିବ ମୂତ୍ର ବାହାରିବ। ତେଣୁ ମୂତ୍ର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ବୁଝିଲା। ମୂତ୍ରକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଆମର ବ୍ଲାଡର କାପାସିଟି ହଉଛି ପାଖାପାଖି 250 ରୁ 300 ସିସି। ବ୍ଲାଡରଟା ଗୋଟେ ଥଳି ଭଳିଆ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ତାର କାପାସିଟି ହଉଛି କେତେ 250 ରୁ 300 ସିସି। ସେଥିପାଇଁ ତମର 10টাରେ ଆସିଲ ହେଲା ପରିଶ୍ରା କରିକିନା ଆସିଲ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତମର ଗୋଟେ ଏକ ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆ ହଉଛି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏକ ମଡେଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା। କଣ କରିବା ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଏକକୁ ବ୍ଲାଡରରେ ରଖିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍ସର। ଆମର ମଣିଷରେ ସାଧାରଣତଃ ୟୁରିଆ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ତା ସହିତ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁରିକ ଏସିଡ ଟା ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତଳିପାଦ ଦର୍ଜ ହୁଏ। ତଳିପାଦ ଏଇଯାକ ସବୁ କଣ ହବ ଦର୍ଜ ହବ। ଦର୍ଜ ହବ ମାନେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ୟୁରିକ ଏସିଡ ୟୁରିଆ ୟୁରିକ ଏସିଡ ବିଶେଷ କରି ଏମୋନିଆ କେଉଁଠୁ କାହାର ଚୟାପଚୟରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ମାଛ ମାଂସ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଅଧିକ ଖାଇବା ତାହେଲେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଫର୍ମେସନ ଅଧିକ ହବ ଏବଂ এই ତଳିପାଦ ଫୁଲିଯିବ ଆଉ କଣ ହବ ଦର୍ଜ ହବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଯେ କଣ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି ୟୁରିକ ଏସିଡ ଅଧିକ ହେଇଛି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ ତା ସହିତ ୟୁରିକ ଏସିଡ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏମୋନୋଟେଲିକ ୟୁରିଓଟେଲିକ ୟୁରିକୋଟେଲିକ। ଏମୋନୋଟେଲିକ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ଏମୋନିଆ ୟୁରିଓଟେଲିକ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ୟୁରିଆ ୟୁରିକୋଟେଲିକ ହେଲା ରେଚନ ପଦାର୍ଥ କଣ ୟୁରିକ ଏସିଡ। କଣ ବାର୍ଡସ ଆଉ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାମଲ୍ସ ବେଙ୍ଗ ସାର୍କ ଏମାନେ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ କି ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟାରେ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ନଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମର ଏମୋନିଆ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନରେ ଯକୃତରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବୃକକ ମୂତ୍ରାଶୟ ଏବଂ ମୂତ୍ର ସାରଣୀକୁ ନେଇ ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ରେଚନ ପଡିବ ଇଏ କେତେ ମାର୍କ 4 ମାର୍କ। କଣ 4 ମାର୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବୁଝିଲା। 5ଟା ପଏଣ୍ଟ 4 ମାର୍କ ବୁଝିଲା। ତା ସହିତ କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ। ଏଇଥିରୁ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୁଝିଲା।